wave optics में सबसे पहले see, we'll just rush through the theoretical part. So light is a form of energy which causes the sensation of light on eyes, or it is radiation of wavelength lying between ultraviolet and infrared radiation. Visible light उसी के बीच में होता है. So visible light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. So light is studied under two sections. One is geometrical optics and other is wave optics. Geometrical optics we have already done. Wave optics we are doing right now. Now there are different theories of light basically. So पहला तो है Newton's corpuscular theory of light. Then we have Maxwell's electromagnetic theory of light, Planck's quantum theory of light, de Broglie's dual theory of light, and Huygens wave theory of light. तो हम लोगों ने जो है एक एक करके क्या थ्योरी है, we'll just go through it. पहला Newton's corpuscular theory of light है. This theory was proposed by Newton. Characteristic of the theory क्या क्या है भाई? Extremely minute, very light and elastic particles are being constantly emitted by all luminous bodies in all directions. तो कोई भी luminous object है जो light source है, it will emit these elastic, very light particles in all the directions. These corpuscles travel with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. When these corpuscles strike the retina of our eye, then they produce the sensation of vision. The velocity of these corpuscles in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The different colors of light are due to different size of these corpuscles. The rest mass of these corpuscles is 0. The velocity of these corpuscles in an isotropic medium is same at in all directions, but it changes with the change of medium. Now these corpuscles travel in straight line and these corpuscles are invisible. तो ये सब characteristics थे Newton's corpuscular theory of light का. The phenomena explained by this theory, कौन-कौन से phenomena हम इससे explain कर पाए? पहला था reflection and refraction of light, rectilinear propagation of light, and existence of energy in light. तो ये तीन phenomena हम explain कर पाए. और कौन से फिनोमेना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन सब से बनता है. इनफैक्ट तुम्हारे बोर्ड में भी बहुत बारी आता है कि ये जो थ्योरी था इससे कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन हो सकते थे, कौन से नहीं हो सकते थे, आपको एक ऑप्शन चुनना होता था. नाउ फिनोमेना नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दूसरा, velocity of light being greater in rarer medium than that in denser medium, ये भी explain नहीं कर पाए. और तीसरा, photoelectric effect and Compton effect could also not be explained using corpuscular theory. Now comes the second theory, was Maxwell's electromagnetic theory of light. Now this theory was proposed by James Clerk Maxwell. Now, characteristic of the theory, according to this theory, light is an electromagnetic wave consisting of mutually perpendicular time-varying electric and magnetic fields, which are also perpendicular to the direction of the propagation of light waves. Electromagnetic waves need no material medium for their propagation. These waves travel in vacuum with speed of c is equal to 1 by root under mu naught epsilon naught. And in a medium, V is equal to 1 by root under mu into A. Now the phenomena explained by this theory is Maxwell's theory, unified light and electromagnetism. It proved that light is an electromagnetic wave. It proved transverse nature of light, and this theory derived expression of speed of light. Now phenomena not explained by this theory is, this theory could not explain certain physical phenomena like photoelectric effect and Compton effect, and it failed completely to explain emission and absorption of radiation. Now, quantum theory of light, Einstein put forward a new theory of the nature of light known as quantum theory. He used Planck's quantum hypothesis of black body radiations. Now, characteristic of the theory was, according to this theory, light consists of packets of energy known as photons. A photon is a massless particle which moves with speed of light. Each photon has an energy equal to h into nu, where h is the Planck's constant 6.63 into 10 to the power minus 3
joules per second, and nu is the frequency of radiation. Now, phenomena explained by this theory, with the help of this theory, photoelectric effect and Compton effect were explained by Einstein and Compton respectively. Phenomena not explained by this theory failed to explain interference, diffraction, and polarization of light. Now comes dual nature of light. So when scientists could not frame a single theory to explain all the phenomena of light, ultimately de Broglie concluded that, like matter, light has dual nature. So this conclusion was based on the fact that if radiation can behave like a particle, then material particles can also behave like radiation. So according to de Broglie, moving material particle is always associated with a wave known as matter wave or de Broglie's wave. Huygens and Fresnel's ether wave theory. So in 1678, Huygens proposed his theory of wave nature of light, in which he assumed that light is a periodic disturbance transmitted through an imaginary medium called aluminiferous ether or simply ether. But later on, existence of ether could not be proved, and hence the theory was rejected. Wave theory of light given by Huygens explained the reflection, refraction, interference, and diffraction of light successfully. This theory could not explain the rectilinear propagation of light. Now, Huygens theory, है ना, तो वेव ऑप्टिक्स यहीं से एक्चुअली स्टार्ट होता है हाइजेंस थ्योरी से. सो wavefront is defined as the locus of all particles of a medium vibrating in the same phase at a given instant, है ना. तो ऐसे सारे पार्टिकल जो कि एक सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं किसी मीडियम में is known as wavefront. So wavefront is defined as locus of all the points of a medium vibrating in the same phase at a given instant. The phase difference between any 2 points situated on the same wavefront is always zero. In other words, a wavefront is defined as a surface of constant phase. तो पूरा a surface जिसके ऊपर पूरे surface पे same phase हो उसको wavefront कहते हैं. The speed with which the wavefront moves outward from the source is called the speed of the wave. तो ये wavefront जिस speed से move करता है outwards बाहर की तरफ, that is known as the speed of the wave. The energy of the wave travels in a direction perpendicular to the wavefront. तो एनर्जी जो है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय रे perpendicular to wave front. The shape of a wave front depends upon the shape of the source of disturbance, right? Ray of light is normal to the wave front. There are different types of wave front. Okay? So this ray of light is normal to the wave front. Now spherical wave front, pehla. So if the source of disturbance is a point source O, then the wave front is spherical. तो अगर एक point source होगा तो उसके चारों तरफ है ना spherical wave front बनेगा, और ये spherical wave front outward इस direction में travel करेगा, है ना. तो जो energy है वो इसके perpendicular होगा, इसके है ना radially outward direction में energy travel करेगा, और ये हमारा wave front हो गया, spherical wave front. तो एक अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है तो वेव फ्रंट हमेशा स्फेरिकल होता है. उसके बाद सेकंड है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. तो यहाँ पे अगर लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, तो वहां पर से जो वेव फ्रंट निकल के आएगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकल के आएगा. ठीक है. सो देयर विल बी अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट गोइंग आउट. So if the source of disturbance is a slit AB, that is a line source, then the wavefront is cylindrical because all the points equidistant from the source lie on the surface of the cylinder. Now third one is plane wavefront. ठीक है. अब ये plane wavefront क्या है? At a very large distance from the point source, a small part of the spherical wavefront appears plane, and this, तो जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत डिस्टेंस पे चला जाएगा उसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका कर्वेचर धीरे धीरे स्ट्रेट होता जाएगा, मतलब वो स्फेरिकल से स्ट्रेट कर्वेचर हो जाएगा, राइट. सो ये जो स्ट्रेट कर्वेचर हो रहा है
मतलब जो स्ट्रेट वेव फ्रंट है, इनको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं. So at a very large distance from the point source, a small part of the spherical wavefront appears plane, and this part of the spherical wavefront is called plane wavefront. Thus, a spherical wavefront appears as a plane wavefront after traveling a large distance from the point source. Now, Huygens theory. So, Huygens principle gives geometrical details of traveling of wave. This principle is used to find the position of the given wavefront at any instant if its present position is known. According to Huygens principle, each source of light is a center of disturbance from which waves spread in all directions. Now, all particles equidistant from the source and vibrating in same phase lie on a surface known as wavefront. तो जैसे इस point source का ये एक wavefront हो गया. Each point on a wavefront act as a fresh source. तो जितने भी ये points हैं wavefront में, that will act as a fresh source. और उससे एक secondary wavefront generate होगा. The secondary wavelet spread out in all direction with the speed of light in a given medium. The new wavefront at any later time is given by forward envelope. तो इस secondary wavefront का अगर टेंजेंशियल पॉइंट को टच करता हुआ जो पूरा एक wavefront बनेगा, वो उसका सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम निकल के आएगा. उसी तरह यहाँ पे अगर प्लेन वेव फ्रंट है, राइट, सो इस प्लेन वेव फ्रंट में, राइट, जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन वेव फ्रंट पे, दैट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स, और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट करेगा और इसके टेंजेंट पे जो हम दूसरा एक wave front बनाएंगे, that is A1 B1, so that will be parallel to it. Now, wavefront which shows backward propagation of light is not considered. ठीक है ना, तो जो backward propagation of light होगा उसको नहीं consider करेंगे, forward propagation को ही consider करेंगे. It can be shown that amplitude and hence intensity due to secondary wavelet depend on the obliquity factor. ये सब इतना ज़्यादा नहीं करना है, मतलब बेसिक चीजें समझनी है हम लोग को. Now, reflection on the basis of Huygens theory, है ना. So ये Huygens, ये basically pure theory है ना. ये सब हम लोग CBSE वाली क्लास में already कर चुके हैं, so I will not go through it again. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों वेव थ्योरी से Huygens प्रिंसिपल ने जो एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो है. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन थ्योरी क्लासेस ऑफ CBSE. अब इंटरफेरेंस से स्टार्ट करते हैं. सो क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा भी नहीं ना IIT में, तो जो IIT में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कॉन्सेप्ट पे, वही कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज भी करेंगे. Now, two light waves having same frequency and equal to nearly equal amplitude. So दो light wave है जिसका same frequency है and equal to nearly equal amplitudes are moving in the same direction, superimpose each other at some point, then intensity of light is maximum at some point and it is minimum at some other point. This phenomena is known as interference of light. Now, suppose the displacement of two light waves from two coherent sources S1 and S2 at point P on the observation screen at any time t is given by, so y1 is equal to a1 sine omega t and y2 is equal to a2 sine omega t plus phi, where a1 and a2 are amplitudes of the two waves. Phi is the constant phase difference between the two waves. By the principle of superposition, the resultant displacement will be given by y is equal to y1 plus y2. इन दोनों को ऐड कर देंगे, a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi, इन दोनों को ऐड कर देंगे. It can be proved that amplitude of resultant wave is given by, right, a is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi.
So this is the resultant amplitude, और ये जो phi है, this is the phase difference between these two waves. ठीक है, तो पहला वेव का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे का a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड a विल बी इक्वल टू, and amplitude of resultant wave is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Now let I1 and I2 are intensities of S1 and S2. दो सोर्स है S1 और S2, इनका इंटेंसिटी I1 और I2 है, and I be the intensity of the resultant. So we know that intensity of the resultant is directly proportional to square of the amplitude, or I is equal to K times A square. अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम लोग को निकालना है, दिस इज इक्वल टू I1 plus I2 plus 2 root under I1 2 root under I2 cos phi. Right? So this is the resultant intensity. Now if intensity of both source is same, then I1 plus I2 is equal to I0. अगर जो individual sources हैं, है ना, उन दोनों का इंटेंसिटी अगर सेम है, दोनों I0 के बराबर है, तो नेट इंटेंसिटी इज 2I0. यहाँ पे पुट कर दोगे I0 प्लस 2, so I0 plus I0 2I0 plus 2I0 cos phi. तो 2I0 कॉमन ले लोगे, 1 plus cos phi हो जाएगा. 1 plus cos phi को 2 cos square phi by 2 से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये 4I0 cos square phi by 2 हो जाएगा. So this is the resultant intensity. अगर दोनों सोर्स ऑफ लाइट का इंटेंसिटी सेम है I0 के बराबर. If x1 and x2 are distance of sources s1 and s2 from point of observation P, then path difference between the two waves reaching P is given by delta P is x2 minus x1. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर फोर्थ पॉइंट में I इक्वल टू के स्क्वायर लिखा है, के क्या है उसमें? कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि हम लोग को ये पता है कोई भी कांस्टेंट होगा. आई अच्छा. यहाँ पे हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी साइन में रिप्लेस हाँ, करेंगे तो कांस्टेंट जुड़ जाता है. कांस्टेंट आता है. वो कांस्टेंट का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करेगा वहां पे क्या. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. ये अब जो ये सिक्स्थ वाला पॉइंट है, ये समझो कि यहाँ पर से S1 से जो P का डिस्टेंस है x1 है, S2 का P का डिस्टेंस x2 है. अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो वो x1 माइनस x2 हो जाएगा. मतलब S1P माइनस S2P पाथ डिफरेंस निकाल के देगा. ठीक है, दैट इज x1 माइनस x2. तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, डेल्टा P पाथ डिफरेंस. अगर हम x2 को ज्यादा मानते हैं तो x2 माइनस x1 हो जाएगा. अब रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई. पाथ डिफरेंस दिया होगा, फेज डिफरेंस निकालना, तभी तो फिर तुम आगे सॉल्व भी कर पाओगे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं. फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. डेल्टा पी क्या है? पाथ डिफरेंस. So phase difference phi is equal to 2 pi by lambda into path difference, and path difference delta P is equal to lambda by 2 pi. इसको इधर लेके चले जाएंगे, lambda by 2 pi into phi. So path difference is equal to lambda by 2 pi into phase difference. ठीक है, एक ही है, मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा. तो ये याद रखो, फेज डिफरेंस बाय 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बाय टी. ये रिलेशन याद करोगे तो सभी के बीच में आपस में रिलेशन आराम से निकाल लोगे. ठीक है. सो फेज डिफरेंस एंगल में होता है डिवाइडेड बाय 2 पाई. पाथ डिफरेंस उसके लेंथ में होता है तो डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. टाइम डिफरेंस तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. तो ये याद करना बहुत आसान है. नाउ मैक्सिमा, अगर हम लोग को ये देखना है कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos phi. अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब cos phi का वैल्यू 1 होगा. कंडीशन फॉर मैक्सिमा cos phi इज इक्वल टू 1. वो कब होगा? phi 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. तो phi इज इक्वल टू 2n पाई पे मैक्सिमम
मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा पी, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमा के केस में, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस, इसको देखो फेज डिफरेंस पता चल गया, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू लैम्डा कर देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एन लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस होगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा A1 प्लस A2 हो जाएगा, है ना, बिकॉज जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर हम लोग देखेंगे A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई का वैल्यू 1 है मैक्सिमा के केस में, तो दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2A1 A2, so this will be equal to A1 plus A2 का whole square, right? So this is एक मिनट, रूट अंडर ये होगा, गलत लिखा, ये रूट अंडर मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। So this will be equal to A1 plus A2. So maximum this is A1 plus A2, और मिनिमम इंटेंसिटी अगर हम लोग करेंगे तो I1 plus I2 plus 2 रूट अंडर I1 I2, राइट। और I मैक्सिमम में, सॉरी, ठीक है, so I maximum is equal to रूट अंडर I1 plus रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर हो गया। और इंटेंसिटी मैक्सिमम निकल गया। अगर यहाँ पे I1 I2 I0 के बराबर है तो यहाँ पे 2 I0 का होल स्क्वायर 4 I0 हो जाएगा हमारा। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 I0। अब मिनिमा के केस में ये कॉस फाई जो है माइनस इंटेंसिटी I इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस फाई। मिनिमा के केस में कॉस फाई इज इक्वल टू -1, सो -1 हम लोग पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इज पाई 3 पाई 5 पाई, तो फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई। पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा बाई 2 ये सब, पाथ डिफरेंस इज 2n-1 लैम्डा बाई 2। A minimum is A1 minus A2 and I minimum is I1 plus I2 minus 2 root under I1 I2. So minimum intensity is root under I1 minus root under I2 का whole square. So if the intensity of both source is equal, right, तो वहाँ पे minimum intensity 0 हो जाएगा, that is perfectly dark. Now coherent and incoherent sources. So two sources of light which continuously emit light waves of same frequency or wavelength with a zero or constant phase difference between them are called coherent sources. Incoherent sources, तो अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है, तो ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। सो टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच कंटिन्यूअसली एमिट लाइट वेव्स of same frequency or wavelength with a zero or constant phase difference between them.
Incoherent sources, two sources of light which do not emit light waves with a constant phase difference, are called incoherent sources. Need of coherent source for interference. So when two monochromatic waves of intensity I1, I2 and phase difference phi meet at a point, the resultant intensity is I1 plus I2 plus 2 root under I1, I2 cos phi. Now, the last term, 2 root under I1, I2 cos phi, is called interference term. Now, there are two possibilities. If cos phi remains constant with time, the total intensity at any point will be constant. The intensity will be maximum, that is root under I1 plus root under I2 ka whole square at points where cos phi is 1, and minimum where cos phi is minus 1. Now, sources in this case are coherent. If cos phi varies continuously, right? So if cos phi varies continuously with time, assuming both positive and negative values, then the average value of cos phi will be 0 over time interval of measurement. Then interference term averages to 0. There will be same intensity I is equal to I1 plus I2 at every point. That is, there will be general illumination on the screen. The two sources in the case are incoherent. अगर incoherent sources होगा तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा का जो वो पैटर्न बनता है इंटेंसिटी का वो नहीं बनेगा और वहां पे सेम इल्यूमिनेशन पूरे स्क्रीन पे आएगा. Hence, to observe interference, we need to have two sources of same frequency and having a stable phase difference. Such a pair of sources are called coherent sources. Now, two independent sources cannot be coherent. So, this is because of the following reasons. So light is emitted by individual atoms and not by bulk of matter acting as a whole. So two independent sources cannot be coherent. Light is emitted by individual atoms and not by bulk of matter acting on a whole. Even a tiniest source consists of millions of atoms, and emission of light by them takes place independently. Even an atom emits an unbroken wave of about 10 to the power minus 8 second due to its transition from a higher energy state to a lower energy state. तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि है ना इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट. इसीलिए एक सोर्स को ही हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उससे दो सोर्स बना लेते हैं. The millions of atoms of a source cannot emit waves in the same phase. The light emitted by commonly used monochromatic source remains coherent for about 10 to the power minus 8. After this time, the atoms responsible for emission of light gets changed. The phase difference and hence the interference pattern changes 10 to the power 8 times in 1 second. So our eyes cannot see such rapid changes and a uniform illumination is seen on the screen. So two independent light sources cannot produce a sustained interference. Two coherent sources can be obtained from a single parent source. यही जो हम बात कर रहे थे, सिंगल पेरेंट सोर्स को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं और उससे कोहेरेंट सोर्सेस हम लोग निकाल लेते हैं. Now, some of the methods of producing coherent sources are as follows. Division of wavefront. So in this method, the wavefront is divided into two or more parts by use of mirrors, lenses or prisms. In Young's double slit experiment, the two sources S1 and S2 get light from the same source S. So whatever phase changes occur in S1, the same phase changes occur in S2. So the relative phase difference between S1 and S2 remains constant with time. So they act as coherent sources. Now in Fresnel's biprism method, two coherent sources are obtained from the same parent source by refraction. And in Lloyd's mirror method, a source and its reflected image act as two coherent sources. तो देखो अलग अलग जगह पे बताया हुआ है. यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द टू सोर्सेज गेट लाइट फ्रॉम द सेम सोर्स एस. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं.
ठीक है, or whatever the phase change occur in S1, the same phase change occur in S2. Relative phase difference between S1 and S2 remains constant with time, so they act as coherent sources. और Fresnel biprism में two coherent sources are obtained from same parent source, and similarly Lloyd's mirror method में यहाँ पे a source, ये सब interference के अलग अलग तरीके हैं, right? So in Lloyd's mirror method, a source and its reflected image act as two coherent sources. Now division of amplitude. Now division of amplitude, the amplitude of incoming beam is divided into two or more parts by partial reflection or refraction. These divided parts travel different paths and are finally brought together and produce interference. Now, example, the brilliant color seen in a thin film of transparent material like soap film, oil film, and Michelson's Inferno, interferometer, Newton's ring, etc. ये सब example है यहाँ पे हम लोग जो डे टू डे लाइफ में ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंस का. Now, a condition for obtaining two coherent sources of light, तो पहला है two sources of light must be obtained from a single source by some method. ठीक है, तो ये हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जनरली यूज करते हैं. देन द रिलेटिव फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स from the sources will remain constant with time. The two sources must give monochromatic light, है ना, monochromatic light मिलना चाहिए इन sources से. Otherwise, different colors will produce different interference pattern and fringes of different colors will overlap. तीसरा, the phase difference between the waves arriving on the screen from the two sources must not be large. It should not path difference, sorry, path difference between the waves arriving on the screen from the two sources must not be large. It should not exceed 30 centimeter path difference. Then the phase difference produced due to path difference will not be constant. There will be a general illumination on the screen. Now conditions for sustained interference. Sustained interference मतलब वो interference काफी देर तक वैसे ही बना रहे उसके लिए. To obtain a stationary interference pattern, the following conditions must be fulfilled. पहला condition है the two sources should be coherent. सबसे basic condition. They should vibrate in same phase, or there should be a constant phase difference between them. Second, the two sources must emit continuously waves of same wavelength and frequency. तीसरा, the separation between two coherent sources should be small. चौथा, the distance of the screen from the two sources should be small. Right. Separation between two coherent sources should be small. The two sources must emit continuous waves of same wavelength and frequency. तो wavelength और frequency same होना चाहिए. Separation इनके बीच का small होना चाहिए. Distance of screen from the two sources should be small. जो capital D है वो small होना चाहिए. For good contrast between maxima and minima, the amplitude of two interfering waves should be as nearly equal as possible and the background should be dark. So for a large number of fringes in the field of view, the sources should be narrow and monochromatic. Now there are certain important points which we need to note. First is interference follow law of conservation of energy. Second, average intensity is I max plus I minimum by 2, right? So this is I1 plus I2 or A1 square plus A2 square. Now intensity is directly proportional to width of slit and is proportional to amplitude square. Right. So intensity I1 upon I2, the ratio of the intensities is equal to width of slit, ratio of width of slit, or which is equal to A1 square by A2 square. Now I maximum by I minimum is equal to root I1 plus root I2 ka whole square divided by root I1 minus root I2 ka whole square, and which is A1 plus A2 ka whole square by A1 minus A2 ka whole square. So this is A maximum by A minimum ka square. Fringe visibility
V is equal to I maximum minus I minimum by I maximum plus I minimum into 100%. ठीक है? If when I minimum is 0, then fringe visibility is maximum. That is, when both slits are equal or of equal width and fringe visibility is the best and equal to 100%. Now, let us do some questions here. So यहाँ पे if I1 is equal to 3 sin omega t और I2 यहाँ पे दे रखा है 4 cos omega t, ये दोनों साथ में इंटरफेयर करेंगे. Find I3 which is given by I3 is equal to I1 plus I2. So ये बस बेसिकली नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कुछ नहीं करना है. I3 is equal to I1 plus I2 मतलब 3 sin omega t plus 4 cos omega t. So this is equal to इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते थे ना, जिसमें ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी होता था, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे. यू रिमेम्बर? याद है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा भी तुम लोग को? यहाँ पे रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3/5, 5 कॉमन ले लो इसमें से, 3/5 साइन ओमेगा टी प्लस 4/5 कॉस ओमेगा टी. ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/5 मतलब साइन 37 होता है, साइन 37 इंटू साइन ओमेगा टी और ये cos 37 इंटू कॉस ओमेगा टी. ठीक है, या अगर साइन के टर्म्स में ही लिखना है इसको क्या कर लो, साइन 37 को या इसको cos 53 लिख दो, cos 53 साइन ओमेगा टी और साइन 53 cos ओमेगा टू. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री. ठीक है, तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ये हमारा I3 हो गया. क्लियर है बच्चों? यस सर. सेकंड वाला भी ऐसा ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन but with intensity in the ratio 4:1 interfere, find the ratio of maximum and minimum intensity. So intensity का ratio is 4:1, मतलब I1 by I2 is equal to 4/1.
मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम बाय I मिनिमम, इसका हम लोग अभी फॉर्मूला देख भी रहे थे. दिस इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस रूट I2 बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब I2 को अगर हम लोग बाहर लेके जाते हैं, I2 को कॉमन कर लो. I2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 बाय I2 प्लस 1, और यहाँ पे I2 को कॉमन लेंगे रूट अंडर I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. I2 कैंसिल हो गया. रूट I1 बाय I2 4 बाय 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. 3 बाय 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9. ठीक है. सो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम इज 9 बाय 1, that is 9:1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी in case of interference of n identical waves each of intensity I naught if the interference is coherent, and second if it is incoherent. ठीक है. तो अगर कोहेरेंट है, पहले तो अगर दो वेव्स का अगर हम लोग मानते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा I is equal to I1 plus I2 plus 2 रूट अंडर I1 I2 cos phi. ठीक है. और यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एन. सो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, right, so for maximum intensity we have I is equal to रूट अंडर I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर. I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos phi, यहाँ पे 1 हो जाता है. नाउ सिमिलरली फॉर n आइडेंटिकल वेव्स, तो अगर आइडेंटिकल वेव्स है, पहले तो फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स हमारे I क्या हो जाएगा, रूट अंडर I नॉट प्लस रूट अंडर I नॉट का होल स्क्वायर, 2 रूट अंडर I नॉट का होल स्क्वायर. So this is 2 square I naught. So for n identical waves, net intensity I will be I naught plus root I naught plus root I naught plus n times तक ये जाएगा का होल स्क्वायर. सो n स्क्वायर I naught हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी. ठीक है. और फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, ये कोहेरेंट सोर्स के लिए, ठीक है, इनकोहेरेंट वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बस ऐड हो जाता है, इंटेंसिटीज I1 प्लस I2 सीधे ऐड हो जाएगा इनकोहेरेंट सोर्स में.
सो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने करा था इफ cos phi varies continuously with time then incoherent source हो गया वो, उस केस में I is equal to I1 plus I2 plus I3 up to IN. I is equal to I0 plus I0 plus I0 n times कर लेंगे इसको, तो I is equal to n times I0 होगा. ठीक है, ये यहाँ पे इंटेंसिटी I is equal to n स्क्वायर I0 हो रहा है और यहाँ पे n I0 हो रहा है. क्लियर है बच्चों? तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में n I0 और कोहेरेंट सोर्सेस में n स्क्वायर I0. Next question is, if two waves represented by y1 is equal to 4 sine omega t, y2 is equal to 3 sine omega t plus pi by 3. a1 जो पहले वाले का एम्पलीट्यूड 4 हो गया, दूसरे वाले का 3 हो गया. हम लोग को फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव. a इज इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर plus 2a1 a2 cos phi. So this is root under 4 square plus 3 square plus 2 into 4 into 3 into cos of pi by 3. 16 plus 9, 24 into cos 60 degree 1 by 2. So this is 25 and 12, 37. Root 37. 6.08. Clear बच्चों? Yes, sir. Next, at two beams of light having intensity I and 4I, है ना, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is pi by 2 at point A and 2 pi at point B. Then find out the difference between the resultant intensities at A and B. ठीक है, intensity at A will be equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos of phi. तो इंटेंसिटी एट ए I1 कितना है, I plus 4I plus 2 into I into 4I into cos of pi by 2. cos pi by 2 क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, ये 5I हो गया. उसी तरह इंटेंसिटी एट B इज इक्वल टू I plus 4I plus 2 root under I into 4I into cos of 2 pi. cos of 2 pi 1 हो जाता है, तो 4I square 2I into 2 4I plus 5I 9I हो गया. कह रहे डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटीज एट ए एंड बी, मतलब IA minus IB is equal to 4I का. सो बेसिकली IB बड़ा है तो IB minus IA, डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच. 4I हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कल हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे. We'll try to finish this.
क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर फिर।